Hi guys. So last time we did the Mauryan and post-Mauryan architecture and the art. Now we are coming to the Gupta age. So it's also known as the Golden Age जो आपको सभी को पता होगा. Okay. So in this series I am just not reading and explaining and not just studying. So more than I would say these videos are kind of like I am studying it. I am just giving you an explanation what I think, what is written and moreover I can say I'm not here to I'm not teacher type of thing कि मैं आपको explain कर रहा हूँ चीज़ें as a teacher perspective from the teacher point of view, but from the student point of view I can see it like I'm preparing, as well as I can say कि uh, I'm just putting on YouTube for like I'm and for me I to understand well and to make the motivate the people like who can't study, like when we come together and we'll stream together. So moreover it is very helpful for every aspirant as well as the uh, school people, like intermediate or less than that, and of course the degree as well. Okay, moving next. So coming to the Gupta age, the emergence of the Gupta Empire is in the 4th century. So we'll not go in the history. We are studying art and culture, so that's why. So plus, I want to add something because in this separate series of art and culture, I'm also making notes for myself. You know? Like if you see another things like the politics series or the live series, we are not making notes. We are just explaining the things. Here, solely I'm making notes. That's why it takes more time to explain or something. While the earlier Gupta rulers were Buddhists and continued the tradition of Buddhist architecture, temple architecture came into forefront under the patronage of the Hindu rulers of this later Gupta phase. है ना? Means जो starting के गुप्ता एज की starting थी, that was rulers थे गुप्ता एज, means गुप्ता एज for x थे y period के चल रही है. सम टाइम के लिए for x to x.1 इस टाइम के लिए जो रूलर्स थे वो बुद्धिस्ट थे इन द गुप्ता एज. But after that, the Hindu rulers will came, है ना. But at that time, Buddhist architecture were very famous, है ना. जब तक ये Buddhist ruler थे in the Gupta age. Now, temple architecture reached its climax during this period. जो temple architecture थे ठीक है. Similarly, Buddhist and Jain art also reached its peak during the Gupta age. The Gupta rulers, especially in the later phase, were Brahmanical rulers, है ना. However, they showed exemplary tolerance for all other religions. ठीक है. Three principal deities worshipped was Vishnu, the northern and central part of India, Shiva in the central southern part, and Shakti in the eastern part of India. So if you can see the Vishnu in the northern and the central part means the Jammu Kashmir, Himachal, Punjab to Madhya Pradesh, ठीक है, and Shiva in the southern parts, Tamil Nadu, Kerala, with Maharashtra, etc. And the Shakti in the eastern parts means Kolkata, Bihar, whatever Mizoram, Nagaland, and the Malabar coast or southwest part of India, we can say. Architecture during this period. Now, during the Gupta period, the architectural development of the caves remained constant. However, the use of mural paintings on the walls of the caves became an added feature. So, mural paintings on the केव्स की जो वॉल थी केव्स की उनके ऊपर के वॉल ऑफ केव्स. Okay. Some of the finest example of mural painting was Ajanta and Ellora. So example was Ajanta and Ellora. Okay. Now coming to the Ajanta caves. Ajanta is a series of rock cut caves in the Sahyadri range. So Ajanta caves. So rock cut caves basically rock को कट करके बनाई हुई caves.
comes under the Sahyadri ranges, and the river comes is Waghora near Aurangabad, Maharashtra. Okay. Now, 29 caves, out of which, okay, 29 caves, there of which 25 was used as viharas. तो viharas हमने देखा था रेजिडेंशियल के लिए, and 4 were for chaityas. Chaityas means the prayer halls. Okay. So out of 29 caves, 25 were the viharas यानी कि residence यानी कि residence means for the king etc. और you can say the people जो रहते थे वहाँ उनके लिए, और जो 4 बच गई वो prayer halls. The caves were developed in the period between 200 BC to 650 AD probably. So it's a probabilistic range. Okay, the Ajanta caves were inscribed by the Buddhist monk, एंड इंस्क्राइब को हमने देखा ना कि ये अगर गुप्ता एज की स्टार्टिंग की थी, तो गुप्ता एज की स्टार्टिंग में जो काम था वो जो रूलर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, तो उनके आर्किटेक्चर चलते थे बुद्धिस्ट के, है ना? तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने ये एनग्रेव इंस्क्राइब की थी अंडर द patronage of the Wakataka kings, है ना? Wakataka kings. The names of Wakataka king Harishena being a prominent one. The figure is these caves were made using fresco painting technique and demonstrate considerable naturalism. Okay, fresco painting figures made using fresco painting. तो नेचुरलिज्म शो होता था. द कलर्स वर obtained from local vegetation and minerals. ओके, द कलर्स जो पेंटिंग के लिए यूज किए जाते थे वो लोकल वेजिटेशन से मिनरल से निकाल लिए. द आउटलाइन ऑफ द पेंटिंग वर डन बाय इन रेड कलर एंड देन द इनसाइड वाज पेंटेड. So outlines were done by a red color and then inside was painted. Okay, Cave 16 is one of the most elegant specimens of cave architecture. The painting is generally themed around Buddhism. We are talking about cave number 16, the life of Buddha and Jataka stories. Out of 29 caves, 5 were developed during the Hinanya phase, while the remaining 24 were developed during the Mahayana phase of Buddhism. Reference of the Ajanta caves can be found in the travel account of Chinese Buddhist traveler Fa Hien. A reference of Ajanta caves found in Chinese Buddhist traveler Fa Hien and Hyun Sang. ये तो चलो सभी को ही पता है वैसे. Okay. There's some prominent sculptures of Ajanta caves when we are talking about it is Mahaparinirvana of Buddha in cave number 26 and Naga king of the consort of cave number 19. Among the important patrons of Ajanta caves were the Varahadeva, prime minister of the Vataka king, Harisena and the Vataka king, Upendra Gupta, Buddhabhadra and Mathura Dasa. ठीक है. Technique of painting that will in this method. So method we have discussed now, फ्रेसो method. ठीक है, 3 स्टेप टेक्निक क्या थी? अ लेयर ऑफ क्ले, सबसे पहले एक पेंटिंग ली, लेयर ऑफ बेसिक क्ले लगा दी,
mixed with cow dung and rice husk was applied on the surface of the rock ताकि इसको प्लेन किया जा सके और चिपकाया भी जा सके, ठीक है। Coating of lime plaster was then applied on the top of it. Lime plaster की coating, then colors and pigments were then applied on the moist surface. This allowed the pigment to seep in the create a lasting image on the rock surface. So example is की Dying Princess and the Flying Apsara. So we have seen this Dying Princess, this kind of structure, है ना? Okay, so this is not very much clear. So this is game number 16 by the way, which is very elegant specimens, है ना? Okay, fresco. So a technique of mural painting executed upon freshly laid on wet lime plaster. तो फ्रेस्को पेंटिंग यही थी कि it is basically a technique of mural पेंटिंग, ठीक है। इसमें किया क्या जा रहा है, तो इटालियन सो बेसिकली ये की किस पे जाती थी, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन अपॉन फ्रेशली लेड और वेट लाइम प्लास्टर, ठीक है। और वेट लाइम plaster. Okay, coming to the Ellora caves. So for Ellora caves, it is another important. ठीक है, so 100 kilometer away from the Ajanta caves. How much caves? 34 caves. जो 17 है वो ब्राह्मणिकल है, 12 बुद्धिस्ट and 5 Jainism. Okay, these set of caves were developed during the period between this period and means these are some kind of new caves, na? So 5th to 11th centuries by various guides from okay विदर्भ कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। गिल्ड्स, गिल्ड्स का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, सो लेट्स सी इट। गिल्ड्स, गिल्ड्स मीन अ सोसाइटी, वेरियस सोसाइटीज के द्वारा बनाई गई, मतलब ओके बाय द वेरियस गिल्ड्स फ्रॉम, गिल्ड्स कहाँ की, विदर्भ की यानी कि कर्नाटका एंड तमिलनाडु, hence the caves reflects a natural diversity in terms of the architecture styles. Of course brahmanical structure अलग होगा, थोड़ा सा बुद्धिस्ट उससे डिफर करेगा एंड जैनिज्म also differ, ना। The Hindu and the Buddhist caves were predominantly constructed by the Rashtrakuta dynasty and the Jain caves were the Yadava dynasty. So basically the Hindu and Buddhist यानी कि ये जो दोनों थी predominantly constructed by Rashtrakuta dynasty and the Jain caves were by the Yadava dynasty. Okay, now coming to this, cave number 10 is a Buddhist chaitya means prayer ka kaam, is known as the Vishwakarma cave or carpentry cave. Buddha is seated in Dharma Chakra Mudra here with the Bodhi tree carved in backside, है ना? This is something अलग है ना, अलग है ये वाली। Okay, this is some kind of चैत्य मीन्स प्रेयर का टाइप, मतलब कि बुद्धा बैठे हैं और पीछे ट्री है। केव नंबर 12 इज ऑल्सो नोन एज तीन ताल, इज द लार्जेस्ट मोनोस ओके इट इज मोनोस्टिक केव, मोनोस्टिक मतलब सिंगल पीस। लेट अस आल्सो सी ना मोनोस्टिक, मोनोस्टिक स्टिक फास्ट सी, हाँ कहाँ गया मोना एस टी आई सी। Okay,
मठवासी मीन्स मॉन्क्स के द्वारा। ओके, एक सेकंड। लार्जेस्ट मोनेस्टिक caves in Ellora. So it is cave 12. Name is Teen Tal. Largest monastery is related somehow, no? Cave in Ellora. It is a three-storied Buddhist cave. One of the panels here depicts a row of seven Manushi Buddhas. The second panel shows seven Dhyani Buddhas. Means three-storied Buddhist. तो you can see ना थ्री स्टोरी मीन्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक तीन स्टोरीज। तो जो एक पैनल है रो का वो दिखाता है मनुष्य बुद्धास को फर्स्ट, सेकंड पैनल दिखा रहा है ध्यानी बुद्धास को। तो 14 is the themed as the Ravana की खाई dedicated to Lord Shiva, Vishnu and Goddess Durga and Lakshmi. 15 is the Dashavatara temple. Okay. Cave 16 is the Kailasha temple dedicated to Lord Shiva. It was developed under the patronage of Rashtrakuta's King Krishna I and was carved out of a monolith and even has a courtyard. ठीक है? In cave number 16, there is also a sculpture on the wall of Kailasha temple depicting Ravana shaking Mount Kailasha. Mm, if we see it clearly, Ravana shaking Mount Kailasha. So I guess he is the Ravana here. So let us see ना अभी तो दिख नहीं रहा कि शिव पार्वती लग रहे हैं ऊपर तो। Okay, moving next. Uh, it considered one of the masterpieces of Indian sculpture. The scene expressed the unlimited power of true knowledge. Cave 29 is Dhumalena, which seems to replicate the famous Elephant Cave. 29. It is a Dhumarkilena. Replicates Elephanta caves. So there is a connection between Ellora and so therefore shows a connection between Ellora and Kalachuris. Okay. Rameshwar Lena. Two famous Jain caves are Indra Sabha and Jagannath Sabha. Jain caves are Indra Sabha and J.H. Jagannath Sabha. Got it. Atri Katanga Bhairav. Atiri Katanga Bhairava. It is a skeleton form of representation of Lord Shiva repeatedly found in Ellora caves. Coming to the Bagh caves. Bagh caves. Located in the banks of Bhagni River, MP. Group of 9 Buddhist caves. Architecturally similar of Ajanta caves. Most significant is Rang Mahal, cave number 4. Cave 4. Rang Mahal. Okay. Mural paintings.
In the Bach caves are more materialistic rather than spiritualistic. Okay, spiritual. Means so इन जगह पे caves इन caves में जो paintings हैं like materialistic more है वो spiritualistic कम है वो means it is something like कि painting will not be somehow related to the god है ना okay Junagadh caves so Junagadh district Gujarat in the place of caves three different sites can be found one is like Khapra Godia Khapra Kodia Baba Pyare and the upper court. A unique feature of the Junagadh caves is the presence of 30 to 35 feet high citadel. Okay, 30 to 30 to 50 feet high citadel. उसको अपर कोर्ट मतलब अपर मीन्स अप ऊपर ना सो 30 to 50 ठीक है और इन फ्रंट ऑफ द प्रेयर हॉल गॉट इट मंडपेश्वर केव्स मंडपेश्वर केव्स बोरीवली मुंबई so it is in Mumbai or Montpelier Montpelier caves uh, developed in late Gupta और लेट गुप्ता में थे ब्राह्मणिकल caves. However, it is later converted into a Christian caves. Later converted to Christian है ना so remains वही है नटराजा सदाशिव and Ardhanareshwara. Ardhanareshwara, the church and its graveyard are situated above the cave. ठीक है उदयगिरी caves. So, उदयगिरी हमने पहले भी देख चुके हैं मौर्यन पीरियड में उदयगिरी एंड खांडागिरी so, ओडिशा में ये है और लाइक कलिंगा किंग के अंदर कंस्ट्रक्ट हुए हैं एंड यूजीसी है ना अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन थी आई गेस चलो हम देखेंगे इनको बट सो हियर इट इज़ डेफिनेटली रिटर्न कि इनको उसके साथ जो मैंने अभी कहा कि वही है पर ये वो नहीं है ठीक है सो क्योंकि मैं भी इनको अभी फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ तो उदयगिरी केव्स आर नॉट एट दैट और दैट टाइप ऑफ केव्स ना कि जो हमने अभी पढ़ी थी उड़ीसा वाली ठीक है तो इधर इन विदिशा विदिशा which is in MP Chandragupta Chandragupta II numerous sculptures on the hill of walls sculptures on the hill walls okay the sculpture of Varaha or the boar incarnation of like Varaha avatar जो थे वो is notable. The caves have one of the earliest Hindu sculptures. It is also the caves dedicated to Shiva, Narasimha, Narayana, and the Skanda. Some of the other rock cut structures are elephant caves. Elephanta caves, sorry. Other rock cut caves. So coming to the Elephanta caves, which is in Maharashtra, and it is also a UNESCO World Heritage Site. Shiva and Sadashiv. Bhaja Caves.
Bhaja Caves, 22 rock cut RCC rock cut caves, and WHS is World Heritage. Okay. Second, relating to Buddhist schools near Pune in Maharashtra, stone carving of women playing tabla. One of the caves. Kerala, Karla caves, sorry. Karla caves आ जाएंगी, बेटसे caves आ जाएंगी, then जोगेश्वरी caves आ जाएंगी. So Karla caves in Maharashtra. So ग्रैंड चैत्य हॉल भी है यहाँ पे, महाराष्ट्र में आ जाएंगी. ये भी महाराष्ट्र में है. बेटसे केव्स, जोगेश्वरी केव्स महाराष्ट्र. ओके, MH, got it. Coming next, Kanheri caves. So in Maharashtra again, Buddhist sculptures in the forests of the Sanjay Gandhi National Park. Okay, this is comes under the national park. Okay, Maharashtra. Buddhist sculptures in the forest of the Sanjay Gandhi National Park also recount to relieve the Buddha and Buddhist Sanjay Gandhi National Park. Sanjay Gandhi NP stands for National Park. Pitralakha, Chaityas and Viharas located in the Satmala range. So, Pital Khora caves, uh, वेस्टर्न महाराष्ट्र में है. वेस्टर्न घाट्स, सतमाला रेंज. कॉपी. मुंबई महाराष्ट्र, कोंडीवेला केव्स, महाकाली केव्स. कॉन्डिवाइट स्लैश महाकाली caves again Maharashtra, Chaityas and Viharas. Kandana caves, Chaityas and Viharas and located in Maharashtra. The construction of the wooden pattern. Kandana caves, MH. Notable part is what? Construction on wooden part, wooden pattern. Sorry. Okay, now moving this Varaha Caves temple. It is also a temple, है ना? Varaha Cave Temple, Malappuram, Tamil Nadu. Okay, UNESCO World Heritage. UNESCO. Copy. Chitana Vassal. Chitana Vassal. So it is Tamil Nadu. Excellent cave paintings mainly related to Jainism. Aihole. So इसके अंदर रावण पहाड़ी. Oldest rock cut architecture. Rock cut cave temples. Okay, Son Bahadur Bhimbetka. Now we have to just wait. कमिंग नेक्स्ट टू द स्तूपास, जो बराबर केव्स थी वो भी बहुत ही फेमस है. ये बिहार में है, ठीक है. सो दिस आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया. अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे बेस्ड है, ठीक है. मूविंग नेक्स्ट स्तूपास. सो
The stupas of the Gupta Age. So the Gupta Age saw a decline in the development of stupas. ठीक है, basically कम हुआ ये. However, Dhamek Stupa at Sarnath near Varanasi is a fine example. तो धामेक स्तूपा जो है एट सारनाथ, ये एक से मतलब डिक्लाइन तो हुआ, बट एक बहुत फेमस जो उस पीरियड का है, ठीक है. इट इज मार्क्ड एज अ स्पॉट वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon, है ना, जहाँ पे फर्स्ट स्पीच जो भी था ना उन्होंने दिया था वो वहाँ पे मार्क्ड है ये. Okay, now in the next video we are going to see the temple architecture. Just quickly recap what we have studied today to the Gupta period. So it is a golden age of India first of all, ठीक है. तो बेसिकली पहले के जैसे कि अगर ये गुप्ता एज है पूरी की पूरी, तो स्टार्टिंग का या फिर कुछ मैक्सिमम पार्ट था वो बुद्धिस्ट रूलर थे. था गुप्ता डायनेस्टी उसका नाम, लेकिन बुद्धिस्ट रूलर थे, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी फेमस हैं. जो भी उनके जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, जो भी उनका एक बनाने का स्टाइल होता था आर्ट और आर्किटेक्चर का. बट इन द लास्ट गुप्ता एज द रूलर्स वर हिंदू, है ना. तो दैट हाउ स्टाइल चेंजेस. द मैक्सिमम इस पे जो आपको मिलेगा दैट वुड बी जिक्र जो है वो थ्री प्रिंसिपल डेटीज का है, विष्णु जी एंड शिवाजी एंड द शक्ति जी, ठीक है. मूविंग नेक्स्ट द आर्किटेक्चर, ठीक है. अजंता केव्स, देखो मूरल पेंटिंग्स होती थी बेसिकली, एंड द देयर इज अदर प्रोसीजर, लेकिन ना तो अजंता केव्स की बात करेंगे, ठीक है. सह्याद्री रेंज में वाघोरा रिवर, फ्रेस्को पेंटिंग्स टेक्निक जो यूज़ की जाती थी ना, प्रोमिनेंट स्कल्पचर्स, ठीक है. केव नंबर 26 एंड 19 नागा किंग एंड महापरिनिर्वाणा, ठीक है. मूविंग नेक्स्ट तो फ्रेस्को मेथड डिस्कस किया गया है, ठीक है. ये तो डाइंग प्रिंसेस जो हमने यहाँ देखी थी. एलोरा केव्स की बात करेंगे, बुद्धिस्ट केव्स, हिंदू केव्स, जैन केव्स. जो बुद्धिस्ट और हिंदू केव्स थी मैक्सिमली जो कंस्ट्रक्ट की गई थी वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड जैन वर यादवा डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है. नाउ दीज ऑफ द सम ऑफ द एलोरा की जो केव्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन. कैलाशा टेम्पल वाली केव भी यहीं पे है, ठीक है. रावण की खाई भी यहीं पे है. एंड जो धूमर लेना है विच इज़ रेप्लिकेटिंग द एलिफेंटा केव्स, ठीक है. एलिफेंटा हमने बाघ केव्स भी देखी, हमने जूनागढ़ भी देखी, हमने मंडपेश्वर केव्स भी देखी, हमने उदयगिरी केव्स भी देखी जो उड़ीसा से डिफरेंट है, ठीक है. ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, उदयगिरी एक उड़ीसा में भी है. एलिफेंटा भोज केरल, भाजा केव्स, कार्ला केव्स, बेटसे, जोगेश्वरी, कन्हेरी, पिटलीखोरा, नंदकोंडा वाइट और महाकाली रिवर्स सॉरी केव्स. कांडना वराहा जो वराह अवतार पे हैं. नाउ भीमबेटका, then again Sonbandar and the Barabar caves. Now we have seen the stupas, ठीक है. They are very important. Now we will coming to the temple architecture in the next series.